Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. So, in this particular video, we are going to discuss the important date from IIBF, especially with regard to JIB certification. Okay, so your dates are out, and there are some changes in registration date. So, how to decode these particular date, how to prepare for this particular examination, and what should be your preparation strategy or your time allotment or your schedule for the coming 100 days, so that we are going to discuss in this particular one. I'll not take your much time, like I'll try to summarize within 5 minutes itself, right? So guys, as we all know, the next session for JAIB and DBF, which will start taking your registration from 4th of February itself, right? तो इस पे हमने कल डिस्कशन भी किया था, ठीक है? We all know this thing. So now your examination is basically these are scheduled in the month of May. So now here is some like kind of challenges which you guys are going to face during your examination week, because maximum bankers, like I can bet ki as per my experience from last 4 to 5 years, so like around 70 to 80% bankers or aspirants, those who go for this particular examination, they generally start their preparation during the exam week or exam month, right? So what major challenge you will face if you are in the same league, right? So see, this is a bigger challenge, especially PPB and AFM. Okay, so first paper is IE and IFS, and you'll have like at least 10-15 days earlier you will start preparing for this particular one. So might you not face any problem with this particular examination? Then the actual problem will which we are going to face, that is your PPB and AFM subject, right? So these two examinations are back to back, 10th and 11th. And then for RBWM is again it's a easiest subject out of these four subjects. Okay? So you will be able to crack this particular examination within these 7 days itself. So you do not have to worry about that particular portion. But these two examinations are kind of concerning. So what you have to do, like let's say we have done so many compilation videos, so at least start watching those particular one. And whenever you plan your study for your JAIB examination, so just keep these two dates in your mind. Okay, let's say like you can start with IN, IFS and AFM. Okay, this is my personal suggestion to all of you, right? Because these two paper are kind of, this is very lengthy one. You have to study keywords, you have to make your understanding in all team. And AFM is completely a concept driven, so you have to again go through the concept things and all team. If you will be like, let's say before this particular one you are done with this these two papers, now like you can easily cover PPB during that particular week, और इवन लाइक थोड़ा बहुत अगर आप पहले से कंट्रीब्यूशन भी करेंगे, सो वो भी आपको हेल्प कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है? एंड फॉर दिस RBWM, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? सो इट इज काइंड ऑफ अ डूएबल थिंग्स, व्हाटएवर यू डू इन योर ब्रांचेस, सो दैट इज पार्ट ऑफ योर पेपर. सो अगर आप एक रीडिंग भी करेंगे तो उससे भी आपका काम हो जाएगा. So these two subjects, I especially want to highlight these particular things, because ज़्यादातर candidate, if you want to clear this particular examination in a single attempt, so you have to work on this way, ठीक है? आप इस तरीके से काम कीजिए. So we have concept videos, ठीक है? हर एक सब्जेक्ट के लिए आपका कॉन्सेप्ट वीडियोस के कंपाइलेशंस आपके अवेलेबल हैं, ठीक है? So you can start watching those particular videos module wise. Then you can go for the unit wise practices and all, ठीक है? At least start with IN, IFS and AFM, ठीक है? As if now, तो इस तरीके से आप जाएंगे, like by the end of March or April you will be done with these two subjects. तो लेट्स से हार्ट टू हार्ट अगर आप अप्रैल तक भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है? सो नाउ यू विल हैव लाइक इन द मंथ ऑफ अप्रैल यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट द पीपीबी इटसेल्फ. तो पीपीबी थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा बोरिंग भी होता है पढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस उसमें आपकी हैं जो आप डेली बेसिस पे करते हो, बट वो प्रैक्टिकल और आपका जो गाइडलाइंस वाले का जो डिफरेंस है ना, वो आपको वहां पे देखने के लिए मिलेगा. सो यू हैव टू रिमेंबर दोस पर्टिकुलर थिंग्स इन ऑल, राइट? तो ये इस तरीके से जिसके ऊपर आप लोग काम करेंगे, ठीक है? सो आप कैसे स्टडी करेंगे अगर आप मेरे से पूछते हैं, सो आई होप like everybody is aware about this channel, ठीक है? So this channel is going to help you out. I have done videos in past as well कि कैसे आपको इनको study करना है. So I have prepared
separate playlist for all of you, right? So जैसे आपका RBWM, so there will be a leak of videos, ठीक है, IN IFS, all 4 modules are there, ठीक है. In case of AFM, all 4 modules, ठीक है. तो इस तरीके से अब now I have already started delivering unit wise MCQs, तो जिसपे भी आपका we have already reached to unit number 14 and 15. तो इस तरीके से, so what is your very first task? तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको ये जो आपके मॉड्यूल वाइज कंपाइलेशन है, ठीक है, तो लेट्स से द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल इज मॉड्यूल ए, ठीक है, सो इट इज सॉरी मॉड्यूल डी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल बी, अच्छा ओके, दिस इज मॉड्यूल ए, राइट, हाँ. So no, this is module A. So if you'll click on this particular one, ठीक है, so it's around 5 hours 35 minutes. So at least you can take some target कि हाँ आज के दिन में मैं ये मॉड्यूल आपका कंप्लीट कर लूंगा, कॉन्सेप्ट्स इन नॉट हिम. आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड पीडीएफ्स ऑन माय एप्लीकेशन एज वेल एज ऑन टेलीग्राम ग्रुप्स, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों का ही, वहां से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं एंड यू कैन रिवाइज थिंग्स इन ऑल. सिमिलरली लाइक फॉर योर आपका जो दूसरा है, जैसे लेट्स से अगर हम बात करें आई एन आई एफ एस का, सो फॉर आई एन आई एफ एस मॉड्यूल डी थोड़ा सा लेंदी रहेगा, ठीक है, सो मॉड्यूल डी इज अराउंड 9 hour वीडियो, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप इनको थोड़ा सा कवर करना स्टार्ट करते हैं ना, सो इजीली यू विल बी एबल टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है. तो अभी से धीरे धीरे करके स्टार्ट करें, ठीक है. और ये जो डेट्स हैं इनको ध्यान रखें, ठीक है. सो रजिस्ट्रेशन आपका गो फॉर अर्ली रजिस्ट्रेशन, रीजन बीइंग if you'll go for the benefit associated with early registration is kind of you'll get your preferred location as well as time slot and all, ठीक है. तो वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, ठीक है दोस्तों. तो ये आपका एक बेसिक कि आपको कैसे आने वाले समय में अपने आप को प्लान करना है, शेड्यूल करना है, so that is definitely going to help you out. Okay, so अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, do mention into the comment section. I'll try to resolve those particular one, and if you need any help from my side, just feel free to share your queries on Telegram group. You can directly ping me over there, okay? So I'll definitely get back to you. Okay, so this is it. Bye bye, take care all, and all the very best for your preparation, guys. Thank you.